Today we define accuracy, what is called accuracy. So I am going to use a term that is known as accurate to n decimal places. The one notion that we will use. So this means that we can trust n digits to the right side of a decimal place. For example, I am doing some numerical calculation. I got answer in first step, that is 1.4. In next, I got answer 1427. And then again I got 142, let us say 6. So you can see from this calculation after decimal 412 412, that digit is fixed. Okay, so it's occurring in second and third and so on. So we can trust these digits. For physical application, let us say you are measuring a weight, and that device go to two decimal places. Okay, so in that device, if you measure weight like 10.23, then it is okay. You can trust 2 and 3. But in the same device that goes only two decimal places, if you write 2, 3, 4, then this 4 is not trustable because the device has limit only up to two decimal places. And that concept is also applicable in numerical analysis. So numerical analysis, we don't have any physical quantity, but we say that how many digit after decimal you can trust or you can rely. So that is known as accurate to n decimal places. And one notion we also use, that is called accurate. Second is accurate to n significant digit. So this means that we can totally trust n digits. So this means that that we can trust a total n digits. सर आपकी वॉइस लैग कर रही है. वॉइस लैग कर रही है. यस सर. सर जो आप लिख रहे हैं वो देर में आ रहा है सर, वो थोड़ा बीच में फंस रहा है. एक मिनट. Accurate to n significant digits means that we can trust a total n digits which are meaningful. So I'm saying that total digit. Okay. Decimal places means after decimal, and significant means total digit that you can trust or you can rely. So, but this also has a mathematical definition that is related to errors. So before writing that definition, I'm giving an example. Let's say we have two numbers. One is 1.23456 7, and another number is 1.2345512. So you can check these numbers are almost same. Okay, and if you subtract these two numbers, so you got 0.000. Okay, so in two subsequent calculation,
you can check that first 5 digit was same, and then you subtracted, you got zeros at first 5 places. 55, 55 आएगा. That is 5 5. Okay. Okay. So this means that a significant digit we talk about in term of approximation. Let us say I have a number, say 1 point, you can say 1 by 3. Okay. And 1 by 3 is 0.3333, etc. This is x, and I am approximating this number with 0.33. And if you, and you can see clearly, two digits are matching, no? 3 3. But when you subtract these two numbers, original minus this one, so you got 0 point, you got two zeros, then 3 3 3, etc. So we say that this number x approximated with x star, and this approximation has two significant digits. Roughly कि कितने डिजिट कॉमन है दोनों में. और ऑन द अदर हैंड जब दोनों को माइनस करोगे यू गॉट टू जीरोज. सो by counting zeros you can tell number of significant digit, and that is the mathematical definition of significant digit. So let x be any number, x be any number, and x star be its approximation, written in decimal form. Okay, so the number of significant digits that tells us that how many position x and x star they agree. So more precisely we say that approximation x star has n significant digits of x if absolute error has zeros in first n places, first n decimal places, counting from the leftmost non-zero position of x, and followed by a digit from 0 to 5. So let's have a quick look on this definition. This says that you have a number x, you have approximation x star. Okay, then find absolute error x minus x star, just subtract and count the zeros. कितनी जीरो आ रही हैं उतने आप बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, और लास्ट में जीरो अपने लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो से शुरू करना है, एंड फॉलोड बाय डिजिट फ्रॉम 0 to 5. यहाँ पे आपने स्टॉप करना है. वो डिजिट अगर 0 1 2 3 4 5 है then it is okay. So I am taking examples to illustrate what I have said in this definition. So for example,
let's take Can you show the previous slide? One sec. okay, so roughly this tells us that how many position x and x star agree, यानी कि x और x star में कितनी पोजीशन सेम है। अब सेम होगा तो माइनस करोगे तो जीरो जाएंगी ना, यही यही मीनिंग है ना। अब दोनों Okay, yes, sir. ठीक है, सेम नंबर को माइनस करोगे तो जीरो, कितनी जीरो मिलेंगी आपको न्यू, that is number of significant digits. So let's take few examples. Let's say you have a number x equal to 2 by 9 and in decimal it is 2.2222 and so on. Okay, I'm approximating this number with 0.222. okay, then what is error, x minus x star, दोनों को subtract कर दो, 0 पॉइंट ये 223 टाइम है तो 30 न्यू आ जाएगा, and after that 2 will be continue. So we say that thus x star has 3 significant digit of x. Okay, just subtract two numbers. Beginning 0 count नहीं कर रहे क्योंकि that was already in x and its approximation. So how many new zeros are coming? तो 3 place same है, you are getting 3 new zeros. So we say that this approximation is correct up to 3 significant digit. Okay? सर ये तो हम जहाँ पे चॉपिंग करेंगे उसकी उतनी ही आएंगी। हाँ, तो वही चीज है, कितने प्लेस सेम है वही चीज है। ओके सर। इसको सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। Although we don't use quite often this in our course, we only use first one, accurate to and decimal place. हम क्या करेंगे, we will iterate, we will repeat something. तो कितने डिजिट मैच होंगे ये हमने चेक करना है आगे। ओके, राइट। अगर हमने ये बताना हो एक्यूरेट टू एंड डेसिमल प्लेसेस तो इसका कितना होगा? accurate to and decimal वो भी 3 है, तीन डिजिट सेम है दोनों। सेम ही, वो तो दोनों की ही सेम होंगे ना। हाँ, दोनों की। बट अगर डेसिमल मतलब से पहले की बात नहीं करते ना, अगला एग्जांपल मान लो एक नंबर ये है, मान लो आपके पास x5 है, ठीक है, और आपने अप्रोक्सीमेट किया उसको 5.1 से। ओके, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, कितनी जीरो नहीं आई? 0.1. 0.1। व्हाट वी से, No significant. वन One significant. सिग्निफिकेंट digit. Number 3, let's take one more example. You have x5, x star is, let's say 4.994. Now subtract them, you got 0.06. अब कितने, अब मैं बोलूंगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब डेफिनेशन क्या कहती है, सो दोनों को माइनस करो, कितनी न्यू जीरो आई, वैसे तो 3 आ रही हैं, बट अगला जो डिजिट है 0 के बाद दैट शुड बी 025, यानी कि आप कह लो कि 50% मिडल में है ना। अगर 50 से ज्यादा सीड करे, अगला डिजिट 6 हो जाए तो एरर, तो हम क्या करेंगे, एक सिग्निफिकेंट डिजिट कम कर देंगे, यानी कि आप पहले 0 पे रुक जाओगे उस पर। So in that case, you say that this approximation has minimum 2 significant digit. एक्सक्यूज मी सर। सर इससे पहले वाला जो एग्जांपल किया उसमें तो एक भी जीरो नहीं थी, पर अपन ने क्योंकि 1 आ रहा है इसलिए अपन ने उसको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है ना। एक जीरो आ गई ना, दिस इज न्यू जीरो। सर पर वो तो पॉइंट के मतलब डॉट डेसिमल के लेफ्ट में आ रही है। 5 में जीरो है नहीं, ये देखो ना, फर्स्ट में तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल 0.0 so that 0 won't be counted, but here you have only 5, there is no 0, so 5 को 5 से माइनस किया, you got this new 0, ठीक है। अगर अगर मान यस सर। अगर ये 0.5 होता
आप 0.51 से अप्रोक्सीमेट करते हैं, फिर इनको माइनस करते तो आपके पास क्या आता 0.01, फिर ये जीरो काउंट नहीं होती, सिर्फ यही काउंट होती है, क्योंकि ये जीरो कहाँ से आ रहा है, इनसे आ रहा है, दैट इज ऑलरेडी देयर। ओके, हाउ मैनी, सर इस केस में फिर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं? इसमें भी वन ही है, सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, वो भी वन है आफ्टर मतलब डेसिमल। सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस दोनों रहते सेम ही। वो मतलब वो डेसिमल के बाद की बात करता है, जैसे ये आपने किया, देखो सेकंड, ये 5 था, डेसिमल के बाद का 9, इसमें तो कोई मैचिंग है नहीं, ठीक है। इसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें, एक्यूरेट टू डेसिमल प्लेस की बात करें, एक्यूरेट डेसिमल डेसिमल तो इसमें कोई मैच हो ही नहीं रहा इनमें, बट इनमें हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे एक्यूरेट टू 1 डेसिमल प्लेस होएगा, हाँ, उसमें थर्ड वाले में कुछ भी नहीं होगा, थर्ड वाले कुछ नहीं कहेंगे हम, सेकंड वाले में भी नहीं होगा, और फर्स्ट वाले में 3 डेसिमल प्लेसेस तो तक। 3 डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे फर्स्ट वाले में, ठीक। so now you got it. And some numbers are full, correct? जैसे मैं, let's say I say that there are 5 students in my class, so that 5, that is exact number. Okay, so we cannot say, so exact numbers you can trust everything. Okay, most integer है, जैसे जैसे मैं बोलूँगी in 1 foot there are 12 inches, so that 12, that is accurate. Okay, and exact number we say that they have all digit that are trustable, or in other words, some numerical analysis books say that exact number have infinite number of significant digit. Okay, so in exact number every digit is every digit is trustable. There are 50 students in my class, so that 50 student cannot be 50. You cannot approximate 50 student with something else. Okay, so you cannot say there are 49.9 student or 50.1 student. And significant digit is defined in various contexts. Even you see some other numerical analysis book. This is in term of relative errors. Some books. And in physics, they also say number of significant digit, but they that depend on device. जैसे मैंने weight का example लिया था, let us say you are measuring weight with the machine that can give you reading before 2 decimal and after 2 decimal. So in that device, if you write something like 10.52, then we say that all digits are trustable, or we say there are 4 significant digits in physical sense. But in the same device, you cannot write this and you cannot write this one. Okay, so physics में they write in physical sense, but in mathematics over x, that is not a physical quantity, that is a number. So we talk significant digits in term of absolute error or in term of relative error. So don't bother about this concept. Now we talk a topic that is called loss of accuracy. Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ सर जी, आपने 0 to 5 वाला क्या बताया था ये मैंने बोला था कि जो डेफिनेशन में? डेफिनेशन में था कि जो आपने जीरो काउंट करना है, तो जीरो के बाद जब काउंटिंग स्टॉप करना है, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा था, यू गॉट 2, बट यहाँ पे 6 आ रहा है, बट वो कहता है कि जो जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज हैं, उनकी जो एंडिंग होगी उसके बाद वाला डिजिट जो होना चाहिए वो 0 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए। तो तभी हमने इस जीरो को काउंट नहीं किया, क्योंकि इसके बाद तो 6 है, तो इससे पहले रुकोगे आप, तो पहले वाले जीरो के Yes, sir. बाद में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2, यानी कि एक कम हो गया। Okay, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ एक्यूरेसी। सो वी विल इलस्ट्रेट दिस फिनोमेना बाय टेकिंग सेवरल एग्जांपल्स।
अब लॉस ऑफ एक्यूरेसी होने का मीनिंग क्या है? सो इफ यू यूज ए लिमिटेड फॉर्मेट, लेट्स से आई हैव ए नंबर 1/3. If someone is writing 0.33 and another person is writing it 0.33333333, so which one is more correct? The second one. Second one. So if you use more digit, you can get more accuracy. And if you, let us say you have a calculator, you are using a calculator in which you can write number up to 4 decimal places only. Okay, so number is this 1.2345, but actual number is this, and you have another number 1.2345, that is 81. But if you do your calculation with that calculator which goes only up to 4 places, and then you subtract, so what you got? 0. Because both number are same at first 5 places, so you got 0. But you can see 0 is not correct answer. But if you do same calculation with MATLAB, and MATLAB use more digits, so then you got your answer 0.0000 चलो उसको चेंज कर देते हैं. This is 4176 or 2. So although number is small, 0.4026, but you are getting your answer correctly. So in other words, if you are doing calculation with similar number and numbers are same at first few places, and if you subtract same number, you got zeros. इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एक्यूरेसी और लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ड्यू टू सब्ट्रैक्शन ऑफ नियरली 2 इक्वल नंबर्स. अब इस ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब इसको हम आंसर भी करेंगे हाउ यू कैन अवॉइड. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? कुछ भी बोल दिया वैसे मैंने. So उसके device with डिजिट्स more बढ़ा दो, number of- डिवाइस के So नंबर ऑफ use डेसिमल more प्लेसेस digits. बढ़ाओ. That is the one possible solution. Use more digit, and also we will see, जैसे आपने लिमिट्स में पहले पढ़ा होगा कहीं पे, when you calculate sin x by x, limit x goes to 0, तो आप कैसे निकालते थे? sin x by x, sin 0 0 by होता है. 0. This is not 0 different. तो बट हम क्या करते one हैं, हम लोग के थोड़ा सा, so calculate value left to the 0, left to right to this. 1 आती है. Also calculate right to the 0, you got 1. और you can write Taylor series. अब Taylor series sin x का क्या होगा? Taylor series of sin x, that is x minus x cube by 3 factorial and so on, है ना? तो इसमें आप x से डिवाइड करोगे तो ये x कैंसिल हो गया, 1 minus x square by 2, this is 3. When you push x goes to 0, every term will be 0, so you got your answer 1. Okay, sin x by x, write Taylor series of sin x, that x जो x प्रॉब्लम कर रहा था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, so you got your answer 1. So this is called reformulation. Okay, so we can reformulate the expression to get correct answer, and that we will do here in numerical analysis. So 2 things we are going to do. One, to get more accuracy, use more digits, and second one, reformulate the expression in which you got wrong answer. Okay, so first example I am taking, this says that consider the evaluation. I want to evaluate this function fx, this is x, square root x plus 1 minus square root x for large x using 6 digit
राउंडिंग, और यूजिंग 6 डिजिट कैलकुलेटर। अगला पार्ट है प्रपोज ए मॉडिफिकेशन इफ पॉसिबल। So these are technical problem now we are studying. So function is this x plus 1 minus square root x plus 1 minus square root x for large x. That is also important point for large. And why I am writing large x? Since you can see a minus sign. ये आ रहा है x plus 1 minus x under root x. And when x will be large, 1 ऐड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। So when x is large, x plus 1 is nearly equal to root x. नहीं, दोनों इक्वल ही हैं ऑलमोस्ट। ये अब ऑलमोस्ट इक्वल हैं, x लार्ज है, मान लो एक का वैल्यू ये आ रहा है, मैं रफ कह रहा हूं, दूसरे का वैल्यू ये आ रहा है, एंड यू आर यूजिंग ओनली 6 डिजिट। So 1 2 3 4 5, so you are using 6 digit and you subtract, you got 0, but actual value is different. Okay, but if you use more digit, you will get your correct answer. So I am preparing a table by taking various values of x, and we will see. So now I write solution. So fx is this x square root x plus 1 minus square root of x. तो कैलकुलेशन में आपको एक आधा दिखा दूंगा, बाकी आपने खुद करना है कैलकुलेशन। सो जस्ट राइट वैल्यू ऑफ x हियर। ओके, x की वैल्यू मैंने ली है 1 10 100 1000 then 10,000 4 zeros, then 1 2 3 4 5 zeros. So one value I am saying exact. अब हम exact value कैसे लिखेंगे? वैसे I don't have exact, by using more digits. अब उसने 6 का है, and this is approximation and approximation using 6 digits. तो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है? फर्स्ट एग्जैक्ट। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऑफन यू डोंट हैव एग्जैक्ट आंसर, सो व्हाट वी से एग्जैक्ट वैल्यू, वी यूज मोर डिजिट्स और you do a calculation with the MATLAB or some other software. So just fit x and write the answer. जो आपका आंसर आए उसको लिख दो आप by using let's say 10 digit 5 digits, sorry 10 digit 8 digit, जो भी आपका डिफॉल्ट आंसर आए। So 0.41421 this is the answer. फिर उसमें 10 फिट कर दो फार्मूले में 10, so 1.54347, फिर 100 फिट करना है 4.98756, फिर 15.8074, फिर 49.9988, then 158.113. Okay, now you do calculation using 6 digit. So 6 digit you need to do properly. मैं एक करके दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल फिट x इक्वल टू 100, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f100, दैट विल बी 100 plus 1 minus 100. So in this calculation you do every calculation using 6 digit.
तो पहले आपने 101 आ रहा है उसका स्क्वायर रूट करना है आपने, ओके, इन 6 digit. Let me know the answer in 6 digit. Square root 101. What would be the answer? 10.0498. 10.0498 75. तो कितने हमने 6 रखने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 तक रखना है, राउंडिंग करनी है। तो 8 से अगला 7 है, तो इसमें एक 1 ऐड कर दो ना, ओके। और 100 का वो तो 10 ही आएगा, तो चाहे 10 को आप ये लिख लो, वो टोटल 6 डिजिट। सो डू कैलकुलेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट 6 डिजिट राउंडिंग एट ईच स्टेप, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कैलकुलेटर में डाला, जो आंसर आया लास्ट में कट कर दिया 6, तो फिर आंसर ये आएगा, ये आपने लिखा है ये वाला, ये तो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो 6 डिजिट आपने हर एक स्टेप को लिखना है, 6 डिजिट एवरी स्टेप। फिर इनको माइनस करना है, फिर माइनस कर लो, कितना आएगा माइनस करोगे तो 100, ये आ जाएगा 0.0499। सो दिस कम्स आउट 4.99, और 6 में लिखना है तो 30 एंड में लगा सकते हो, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, यू कैन ऐड, ओके। So here at 100, so this is answer is 4.99, and अगर फॉर्मेट में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। Similarly, if you fit 10, so answer is 1.554340 in 6 digit, and this is first one is 0.414210. Then you fit 1000, 15.8, आगे भी जीरो लगा लेना चाहिए। So this is just 50, this is just 100. 1 2 3 4 5 6. Now make observation, so compare values, left देखिए right देखो, first value they are similar, second 1.54, first two digits are same but it's okay, 4.98 4.99 it's acceptable, 15.8 it's okay, 49 50 almost ये भी it's okay है। और लास्ट वाला आंसर देखो 158 and 100, so you cannot say 100 is an approximation of 158, there is no matching, है ना। अब ये गलत आंसर 100 क्यों मिल रहा है आपको? अब देखो आपके कैलकुलेटर की लिमिट थी 6 डिजिट, तो इसमें ऑलरेडी है 1 2 3 4 5 3 3 6 डिजिट हैं, तो नंबर इज क्वाइट लार्ज। इन दैट केस व्हेन नंबर इज लार्ज, उसमें 1 ऐड करोगे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, then you put square root x, so these number they become similar, same number को माइनस करोगे you got cancellation, अब कैंसलेशन होगी, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस माइनस की वजह से एंड ड्यू टू 6 डिजिट वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, ओके, क्लियर है पॉइंट ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we make conclusion now, okay. So what conclusion you make from table observation? As x increases, so square root x plus 1 that is nearly equals to square root x, okay, and using 6 digit arithmetic or 6 digit calculator we are getting wrong answers due to cancellation of digits, रीजन भी बताना है आपने, ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ डिजिट्स। सो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड वो उसने कहा कैन यू प्रपोज ए मॉडिफिकेशन। अब इसका मीनिंग है
कि आपने 6 में ही करना है बट आंसर सेम आ जाए आपका, आप उसको 6 को 6 ही रखना है बट ये आंसर सेम। तो अगर आप फार्मूला ऑब्जर्व करोगे, इफ यू सी क्लियरली, ये माइनस प्रॉब्लम कर रहा था यहाँ पे, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है नहीं। तो अगर हम माइनस ही हटा दें तो फिर यू कैन गेट सी समथिंग नाइस। तो माइनस कैसे हटाओगे? मैथ में एक कॉन्सेप्ट है, रैशनलाइज करते हैं ना फंक्शन को, ये चीज थी। यस सो मैथमेटिकली दे आर इक्वल। सो अगर मैं प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, आई कैन डू बोथ आर सेम नहीं। अब ऊपर फार्मूला यूज कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी। ओके, दिस इज a, सॉरी ए को कहेंगे ना, ए माइनस बी, दिस इज a प्लस बी। तो क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर ए पहले का स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर एंड डिवीजन। रूट एक्स प्लस वन प्लस So रूट this एक्स। minus is cancelled. So what you got? X divided by x plus 1 plus square root x. Now there is no minus. So let's again calculate f100. वैसे f100 थोड़ा तो ठीक आ रहा था बट पूरा ठीक तो नहीं है। 100 4.98 4.99। अब इससे कैलकुलेट करके देखो 100 इस फार्मूले से अगेन। सो व्हाट यू डू, 100 division 101 plus 100. We have done all calculation before, so 100 and 101 is square root 10.0499, 10.0499 plus 10 कितना आएगा ये? This is 20.0499, 10 by 24, this comes out 4.98756. Now see this value and see the value in table. Both are exactly equal. 4.98756, 4.98756. तो फर्स्ट पहले आंसर क्या आ रहा था? 4.99। अब फार्मूला मैथमेटिकली तो सेम है, मैथमेटिकली दिस इक्वल्स टू दिस। आपने कुछ नहीं किया, जस्ट आपने रीफॉर्मुलेट किया। digit we also kept same 6 digit, you got correct answer. ऊपर 100 आएगा सर। हाँ सॉरी 100, ठीक है। so this is a modification. So what modification suggests? Try to reformulate the expression if possible. अगर possible नहीं है then it's okay, but that minus sign was problematic, so get rid from that minus. So a minus भी दिख रहा है मैथमेटिक्स में, you can rationalize by multiplying and dividing with the same number. So you can say this equals to this mathematically. Both are equal, okay? And first formula, this is giving wrong answer, this is giving exact answer. And you cannot always rationalize, ये भी एक concept है, हमेशा rationalize भी नहीं कर देना। सर हाँ जी बोलो सर बोलो। मैं यहाँ पे 100 ही क्यों लिया है? वो हमने एग्जांपल लिया, यू कैन टेक एनीथिंग 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है। और मैंने एंड सर ऑल द कैलकुलेशन इन टेबल सर आपने क्या मैटलैब से ली है? हाँ मैटलैब से कैलकुलेशन करी है ये। आप कुछ भी ले लो, आप 1 2 3 ले लो, 1 2 फर्स्ट में 1 ले लो, अगले में 1 2 ले लो, अगले में 1 2 3 ले लो, इसमें 1 2 3 4 ले लो, इसमें 1 2 3 5 ले लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 ले लो, एनीथिंग ओके। वैसे वही लेना आप, ये थोड़ा 100 वाले कंफ्यूज भी करते हैं। So we can take 1, next take 1 2, then 1 2 3, then 1 2 3 4, then 1 2 3 4 5, then 1 2 3 4 5 6. Okay. Yes. This is just for an example. And if you get this question in exam, you will be given data कि किस पे आपने करना है. Okay. वो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है. बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आपने
लेफ्ट टू राइट प्रॉपर मैनर में करनी है. थिंक दैट यू आर ए कैलकुलेटर एंड यू हैव ए लिमिट ऑफ ओनली 6 digit. So do calculation every step in 6 digit. Okay. हर एक स्टेप को आपने 6 डिजिट में करना है. 6 से ज्यादा नहीं करना, 6 से कम नहीं करना. और रैशनलाइज भी हमेशा नहीं करना. मान लो अगर ये एग्जांपल हो, लेट्स से यू हैव दिस एग्जांपल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं x माइनस साइन एक्स. ये कह रहा है कि नियर x इक्वल्स टू 0. देन व्हाट यू डू? सर टेलर सीरीज देंगे एक्स की. यस, वेरी गुड. अब rationalize won't help. So near 0 and you know x equal to 0. Near 0 का meaning exactly 0 नहीं है. Let's take small number 0.001. So in that case, this is near 0. Sin 0 is also 0. So both become same. So what you do in this example? We write Taylor series. So Taylor series of sin x is x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial and so on. So this x will cancel out. So you got x cube by 3 factorial. This is just 6. And अब 0 के नियर है तो आप अगले छोड़ भी सकते हो. So this is nearly this x cube by 6. Okay. So if you want to calculate this function x minus sin x, x small. So rather than using direct formula, use this one, Taylor series. Of course, answer will be small, but it won't be 0. Okay, so I'll stop any query. And if So what are would be the different types of question, like जैसे एक तो हमने इसमें टेलर सीरीज यूज कर लिया, रैशनलाइज अभी यूज कर करेंगे लिया. नेक्स्ट क्लास में. I will do only examples, 3-4 examples. Okay. ओके सर. So राइट सर. दो तीन ही mainly हैं. Taylor series will help and rationalization that also help. राइट सर. Okay. So we will take few more example in next class. Loss of significant digit. और Thank you, sir. एक हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग. वो पॉलिनोमियल के लिए एक अलग चीज है. दैट इज आल्सो बी स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. ओके. एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay, then I stop.